Hello everyone, good evening. I'm coming to you live from the City of Joy, right in front of the iconic Eden Gardens. Right here, we have witnessed memorable battles on the cricket pitch. There is a winner and a loser, and towards the end, they shake hands. But in the political arena of West Bengal, the gloves are off. And that's what is happening between the BJP and the TMC. The BJP is on a surge, and the TMC Supremo Mamata Banerjee fighting to secure her citadel. And one googly or an innings that has made an entry in this election is the caste card. The caste dynamics on both the sides, as both the sides are going all out to claim critical vote banks and cobble together numbers to gain the edge. From the Matuas, Maheshias, Telis, Tambul to the Saha communities. Scheduled castes and scheduled tribes are 30% of West Bengal's population and have emerged as critical vote banks. BJP Chief JP Nadda has promised that a BJP government will form a commission to include these communities in the OBC list, and just a few hours back, Mamata Banerjee released a manifesto promising OBC status for the same communities. So in the 2021 elections, is it social policies or the caste card that will bowl out the either side? Let me bring in my guests. Dr. Nikhil Prasoon is the West Bengal BJP spokesperson, Sanjay Kumar, CSDS director, Riju Datta, spokesperson of the TMC. Sanjay Kumar, cash delivery promise or social caste card? Which one do you think will stump out Mamata Banerjee's political opponent? Neither of these two. I believe this election is being contested only and only in the name of Mamata Banerjee. If you are in favor of Mamata Banerjee, whether caste combinations, promises of bringing some caste community in the OBC fold or not, this is not going to be the factor. Yes, these will have subsidiary role to play, but the key element in this election is one person, one personality, which is Mamata Banerjee. All these political parties, you have mentioned about the two political parties, TMC and the BJP, they're trying to work hard not to leave any chances. So these are all techniques, these are all strategies to mobilize even 0.5% vote, even or even 1%. But I think the real question, the real issue in this election is Mamata is at the center of this election. Yes, so Mamata Banerjee is the real person and the real question in this election. Okay, let me bring Dr. Prasoon. Dr. Prasoon, has Mamata Banerjee taken a cue from Saurav Ganguly's favorite off-drive? The BJP's fielding may be very good, but this particular manifesto in which he has talked about cash delivery promise, which has been one of the calling cards of the BJP. She has completely borrowed a leaf from your own playbook. Good evening, Marya, and good evening to everyone. Actually, this particular manifesto is a testimony of her failures. Now, that is an admission of the fact that she has not delivered in the last decade of her governance. I would like to draw the attention of the people to the fact that there were 112 promises that were done in 2016 Vidhan Sabha elections. Out of that, 35 have been fulfilled, and almost 77 of them remain unfulfilled. So almost 70% of the promises, they remain unfulfilled. And out of the 35 unfulfilled promises, almost 21 promises were done in 2011 as well. So that remains the strike rate of Trinamool Congress. Now they are in a bid to bribe the people, or great people of West Bengal by doling out a few hundred and few thousand rupees. The manifesto does not have any map, any kind of vision based on which it can be construed that there is going to be industrialization in the state. You can very well say that what Mamata Banerjee announced today in her manifesto was something that your party president announced during campaigning in Bengal. So certainly when you look at it, caste is a factor. You cannot say that Mamata Banerjee is not doing or reaching out to this caste. Look at what she has done when this caste certificates have been distributed during the Dware Sarkar. Is that making BJP worried? And that is the reason that announcement came yesterday.
Now, all through these years, almost all the castes across the board, they are completely disenchanted with the performance of this government. A tribal person will have to dole out almost rupees 100 to the government to get a caste certificate. So these things are not going to be forgotten by them. About 6% of the populace of West Bengal is constituted by tribals, as we discussed on that day. So what have they done all through these years? Now, Duware Sarkar is an indicative of the fact that you have not done anything throughout the period that you spent. You wasted the time that you were handed over by the people. Is this big OBC push that is coming from Mamata Banerjee, is this also an acceptance that there is a shift, particularly in the Jungle Mahal area of the OBCs, where the BJP made gains in 2019, and that is the reason why some kind of revisiting of the strategy is happening? See, Marya, first of all, I want to say, we have published our 10-year report card. We have published our full candidature list. And today we have published our manifesto. So we are always, like you said, we are batting in the front foot and we don't need a stadium on our name. And BJP is playing catch up from day one. Now they are so baffled and rattled that, the vision of Mamata Banerjee, the vision of inclusive politics of all the minorities. And she has said categorically, if you see Jhargram and in the Mamata Banerjee's rally and in the top BJP campaigners rally, BJP star campaigners are greeted with empty seats. That is evidence enough. What Mamata Banerjee has just said, that the OBC communities who have been mentioned in the Mondol Commission... The fact that you're talking about the Telis and the Sahas towards the fag end of our second tenure, it's also an acknowledgement that this particular OBC, these OBCs have thrown their weight behind the BJP. No, basically, in the 2019 elections, those areas voted for the BJP. So Mamata Banerjee is going to form a special task force to examine and propose OBC caste to all these communities who are mentioned in the Mondol Commission but are not incorporated, and they will all be incorporated. As simple as that. So this is the pledge that Mamata Banerjee has taken, because we believe in inclusive politics of the minorities, irrespective of caste, creed and color. And BJP has no answer to it. We are, and my good friend was talking about what is the development. Everybody seems to be discussing caste in these elections in Bengal. So certainly when you release your own candidate list, you are talking about the caste identities of those candidates. That means caste is relevant. Caste is the talking point in the battleground Bengal. Unfortunately, Marya, in last 10 years, we never used the religion card or the caste card. But with the foray of BJP into Bengal politics, all these necessary evil has come into play. Why are you making the Bengalis shift away from the larger linguistic Bengali identity to social subcaste identity, which is largely the caste identity? No, Why that are you is talking about the Meshis and other castes? The announcement made by Honorable Home Minister yesterday, or day before yesterday, is an extension of our development-oriented agenda. Now, what, as you said, about 100 crore corpus will be formed for the welfare of the tribals. They have been left in the lurch in the path of development. So this is number one. Number two, these talked about education, health, and water supply. We have given 1,900 crores for Jal Jeevan Mission, after out of which 600 crore remains utilized only. Out of the 1,000 crore in Amphan, it was looted like anything. And about 25,000 crores of national highways have been promised in the budget. Your government in the center, we have got concrete plan the of BJP development. government at the center has been for the last 6 years. Why didn't you use all these cards? Why wasn't this corpus set for the tribals in Bengal? You could have reached out to them through the state government. Because of the hindrances. Why are these promises being made right now? Because the government has constantly been at loggerheads with the center. The state government did not cooperate. What about the Kisan sums not passed on to the accounts directly, which could otherwise have been done? Fine. Yes, Marya, see Sanjay the Kumar bottom. Will get the final words. Sanjay Kumar. Yes. I've really come to the end of this discussion. I'll give the final words to Sanjay Kumar. Sanjay Kumar, go ahead. No, I'm saying... Exactly 10 days to go for the first phase, that is on 27th. What exactly is the significance of this manifesto and the announcement that was made by JP Nadda yesterday? Manifestos play a very little role in Indian elections. Manifestos should be treated as a promise which political parties make in front of the voters, but sadly that's not happening.
political parties release manifesto. We have seen political parties which don't even release the manifesto. We have also have instances where political parties released manifesto in the middle of an election. It seems as if they have forgotten to release the manifesto. Yeah. So manifestos should be seen as a promise they are making to the people of to the voters among whom they are asking for the vote. But sadly, voters don't take it seriously. Even political parties don't take it seriously. They take only those elements of the manifesto seriously which they think would be helpful in attracting votes for the party. So manifestos have a very limited role to play in Indian elections. And cash delivery promise, let me go back to the first question that I asked you. Of course, Mamata Banerjee is the factor in these elections. It's about either voting her back or voting her out. But which one do you think is important? When parties like hers, which has been in power for 10 years, offers cash delivery, that promise, or the social card that has been played by her? I think cash delivery would be a more important tool to mobilize the voters, because voters also think in terms of the long-term impact if a party comes to power, and also they look at the short-term impact. Cash delivery is a promise from which they are going to get something very quickly. So I think cash delivery promises will be more effective compared to parties promising several castes to be included in the OBC and giving them benefits of reservation. All right, Sanjay Kumar, always a pleasure to have you on my shows. Dr. Nikhil Prasoon and Riju Datta, thank you so much for joining us. And I've been in Bengal for the last few days, and here are some more sights, sounds and ideas, basically lots of voices of people as they debate and discuss elections 2021. In narrow bylanes of Kolkata, the BJP flags can be seen jostling with the TMC flags. In several shops here, you can see BJP TMC flags prominently being displayed. People here talk about their political identities openly. I am in Kashipur, Belgatia Vidhan Sabha. Here you can see a small group which has gathered to talk about their choices in this election. So what will decide your vote? किस issue पर यहाँ पर vote होगा? उन्नयन के नाम पे ममता बनर्जी जो उन्नयन किया है इतना साल से, उसी के आधार पे। क्या हुआ है डेवलपमेंट? क्या नहीं हुआ है? 10 साल से जितना काम हुआ है, 10 साल से जितना काम किए हैं, लड़की लोग को जो बोलता है ना, कन्याश्री, रूपश्री और ऑनलाइन पढ़ने के लिए फोन दिया है 10,000 रुपया, जितना हम 34 साल में कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मिला हम लोग को। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी मिले, ममता बनर्जी कोई मिले। आप बताइए। जी, इधर वोट जरूर उन्नयन में ही होगा, लेकिन उन्नयन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का हिसाब से भी होगा। जो भी अभी टेट का जो घोटाला हुआ है, जो एसएससी का जो घोटाला हुआ है, हर साल जहाँ एसएससी नहीं हो रहा है, लास्ट 2011 में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, 2013 में उसका इम्पैनल हुआ था, तो एसएससी का पिछले 7 साल से 8 साल के एसएससी का कोई नहीं है। टीचर लोग स्वास्थ्य भवन का उधर में भूखा मिছিল कर रहा है, उधर पे पुलिस लाठी मार रहा है, इधर का पुलिस प्रशासन पूरी करप्टेड हो गया है। आम फान में जो दुर्नीति आया है उस हिसाब से वोट होगा, हर मुद्दा पे वोट होगा। इनका कहना है कि डेवलपमेंट मोदी जी आएंगे तब होगा। लोग जो बोल रहा है कि मोदी जी आने से अनएम्प्लॉयमेंट घुसेगा, मोदी जी आने से पहले ही आप देखिए डनलॉप ये सब कौन मालिक है, वो तो मोदी जी का सपोर्ट में चल रहा है। तो डनलॉप तो वो काय को राज्य सरकार को नहीं छोड़ता है, डनलॉप बंद कर दिया। इतना बड़ा फैक्ट्री था, ये सब इतना बड़ा फैक्ट्री था, तो वहाँ से कितना बेकार हो गया। तो अभी जो बेकार हुआ तो वो तो मोदी के लिए ही हुआ। ये सब लोग बोलता है कि टीएमसी सरकार में करप्शन है, ग्राउंड लेवल पे बहुत करप्शन है। क्या नहीं, करप्शन तो कोई नहीं है। जो वामफ्रंट का अमल में करप्शन था, अभी तो कोई करप्शन नहीं है। ममता दीदी आने से सब करप्शन बंद हो गया। जो अच्छा सब बड़ा सब गुंडा जो थे, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ करप्शन है? करप्शन ये बार बार बीजेपी इशू उठा रही है, क्या करप्शन इशू है? 100% यहाँ पे करप्शन इशू ही है। आज स्वास्थ्य साथी जो इन्होंने लॉन्च किया है,
ममता दीदी को कोरोना के समय याद नहीं आया था बंगाल की पब्लिक को स्वास्थ्य साथी चाहिए, वोट के समय याद आया स्वास्थ्य साथी का। स्वास्थ्य साथी के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। सबसे पहले तो बात ये करना है कि ये ममता दीदी जो है आमफान के टाइम में और ये कोरोना के टाइम में कौन सा बीजेपी के एमएलए एमपी कौन सा आया था फील्ड में जो ये काम, एकमात्र सिवाय ममता दीदी यहाँ के सीएम, उस टाइम में वो पीक आवर में खुद अकेला अपना जान का बाजी लगा के यहाँ पे आके काम किया। हर एक जगह में बीजेपी का कौन सा व्यक्ति आया था जो यहाँ पे हेल्प करने आया था? कौन सा बीजेपी का नेता आया था यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग खुद सबको डिस्ट्रीब्यूशन किए। ऑलरेडी हम लोग खाना से, राशन से, चावल दाल सबको हम लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किए। सबको यहाँ पे घर घर हम लोग खाना दिए। हम लोग को यहाँ पे पूरा दिए थे। अगर 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 इतना हम अच्छा, लोग 3 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड में पूरा कवर किए। अच्छा अगर इतना ही एक्टिव होता, पहला बात तो है जो अम्फान में जो किया, एक मिनट बोलने दे, एक मिनट। अगर अम्फान में कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है काम करना, कोई भी गवर्नमेंट का काम नहीं होता, विरोधी का काम नहीं होता कि गवर्नमेंट का काम विरोधी करे। पहला बात, अगर गवर्नमेंट कुछ किया है तो एज अ सीएम ये किया है। हाँ, कोरोना में तो लॉकडाउन था, मुख्यमंत्री खुद नहीं माना कोरोना में लॉकडाउन। पहला बात है। दूसरा बात है, कहीं भी कोरोना में मेरा पास पब्लिक के लिए जान बाजी लगा के वो खुद आया था। उस टाइम में आया था क्या अमित शाह, आया था क्या नरेंद्र मोदी? चलिए मान लीजिए बंगाल छोड़ दीजिए, कोई भी एक स्टेट में अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद उतरा हो, यहाँ के वहाँ का बात है कि मान जाए। अनफान के समय मोदी जी खुद आए थे, बंगाल का पूरा सर्वेक्षण किया, इन्होंने रुपए दिए। बट दीदी का बोलना था कि हमें रुपए नहीं मिलते। 1000 करोड़ रुपए जब मोदी जी ने दिए तो ममता दीदी का कहना था ये हमें भीख दे रहे हैं क्या? अगर वो 1000 करोड़ रुपए लास्ट में जब इंक्वायरी में पता लगा, टीएमसी के जो लोकल नेता है, जो कौन से टीएमसी के वर्कर है, उनके पक्के मकान की एक ईंट गिरा के उनको 20,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई। इसके लिए दीदी को जब सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि गलती हो गई। तो गलती क्या सिर्फ टीएमसी वालों के अकाउंट में रुपए जाने के लिए हुई थी? चार्ज है कि करप्शन हुआ है अम्फान के रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ये रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो बोल रहा है ये लोग करेक्शन किया है, वो जो करप्शन हो रहा है तो चलो मान लेते हैं। अगर स्टेट में आया, जो सेंट्रल से चावल आ चुका था स्टेट में, वो कहाँ गया था? सीएम के घर में नहीं, सीएम के घर में नहीं गया था बीजेपी के कोई भी सदस्य के हर एक गोडाउन में, ठीक है, हर एक बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचा है, लेकिन यहाँ तक कहीं नहीं पहुंचा है। जो अभी तक जो मिल रहा है यहाँ का लोकल हो, बंगाल के लोकल से पूछ लीजिए, से सबसे पहले चावल और बीजेपी दिया था या ममता दी खुद घोषणा किया था? हर घर पे पता है और घर को पता है चावल चोरी किया गया है। इस स्टेट का सरकार, ठीक है ना, गरीबों का रोजी जो दाना है ना वो मारा गया है, ये सरकार ने मारा है। कोई भी ममता दीदी को पसंद नहीं कर रहा है। अभी आपको हम बता दे रहे हैं, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है ममता दीदी को, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। अब आपका सवाल ये है कि ममता बनर्जी बोलती हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, जो भाजपा वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी बाहर के हैं, बंगाल की बेटी चाहता है। मैडम बंगाल की भारतवर्ष का रहने वाला बाहर का कहाँ से आ गया? मैडम हम लोग सब भारतवर्ष के रहने वाले, पहले भारत है तो हम लोग सब यहीं के हैं। बाहर का कौन है? प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बाहर का ऐसा तो कोई नहीं बोला है। वो बोले बंगाल के बाहर के। बाहरी मतलब ये नहीं है कि इंडिया के बाहर के है, वो सिर्फ बंगाल के बाहर के है। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में अपना प्रचार करने आ रहे हैं, फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर अपना गायब हो जाएंगे, फिर उनको बंगाल से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सिर्फ अपने इलेक्शन के टाइम पे अपना ये आ रहा है। इस हिसाब से अगर मोदी जी बाहर के नहीं हुए, चलो मान लेते हैं, तो बंगाल के मुख्यमंत्री जो एक लोकसभा से हर एक लोकसभा में, विधानसभा में जा रहा है, उसी में नंदीग्राम में गया है, बोला ये बाहर का आदमी है। तो इस किस तरीके से बोल सकता है? एक सीएम को अपना स्टेट में लड़ने के लिए कोई भी जगह से पावर है, तो उस हिसाब से बीजेपी वाले किस तरीके से बोल सकता है कि वो बाहर के आदमी है? मुझे ये बताइए कि कहाँ से ये सही है कि शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं ममता बनर्जी अब बाहर की है? नहीं, शुभेंदु वो नंदीग्राम का नहीं है। नंदीग्राम की नहीं है ममता दीदी, ये सारा भारत जानता है। बहिरागत अगर कोई नंदीग्राम लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की हैं, तो कहीं से भी चुनाव लड़े। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी स्वराष्ट्र मंत्री भारत के हैं। भारत के नेता कैसे वो बहिरागत हो गए? ये लोग बोलता है कि भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम क्यों गया,
तो गुजरात का गांधीनगर छोड़कर बनारस क्यों आ गया था? 50 किसान को भरमा दे रहा कांग्रेस और किसान को समझा नहीं पा रहा। जीएसटी समझा दिया, काला धन समझा दिया, किंतु किसान बिल नहीं समझा पा रहा। बोलते किसान को भरमा रहा। किसान के लिए किसान हमारे अन्नदाता है। 294 जाएगा, 294 भारतीय मोदी महोदय जी देखिए जी आए थे तो सबसे पहले बोला गया था कि काला बाजारी बंद करेंगे। एक दूसरी बात बोला गया था जो बाहर से इंडिया को लूट के जो बाहर में बैठा हुआ है उसको हम पकड़ के लेके आया। तो पिछले 10 साल से ये हो चुका है क्या? कौन आया अभी? नीरव मोदी को पकड़ के ला सका है क्या? विजय माल्या को ला सका है क्या? अभी तक नहीं ला सका है। तो वो अपना करप्शन इंडिया के मत खोजे, पहले इंडिया से जो भाग के चुकी है उससे खोजे। मैडम ये लोग का पास डेटा नहीं है। बात है ये लोग का थोड़ा नॉलेज कम है। बात है नीरव मोदी विजय माल्या दोनों को ही हम लोग का ढूंढ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम इसी बात का है कि हम लोग का जो प्रोटोकॉल एरिया है उधर का प्रोटोकॉल एरिया में दोनों का कार्रवाई चल रहा है और बहुत ही जल्दी वो लोग इंडिया में एक मिनट टीएमसी पे एक और चार्ज, मुख्यमंत्री पे ये चार्ज है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं, मुसलमानों की अपीजमेंट करती हैं, मुसलमानों के बारे में सोचती हैं और हिंदूज मेजॉरिटी के बारे में नहीं सोचती। अगर हिंदू मेजॉरिटी के बारे में वो ममता बनर्जी सोचती नहीं तो यहाँ के आम पब्लिक को बता चुका होता और यहाँ के मुसलमानों से पूछ लिया जाए कि ममता बनर्जी और हिंदू से भी पूछ लिया जाए कि ममता बनर्जी कितना काम करता है। इतना दूर बंगाल का छोड़ दीजिए, आप यूपी में जाइए, यूपी में जाइए जहाँ पे मुसलमान को क्या अत्याचार हो रहा है, हिंदू को क्या अत्याचार हो रहा है, क्या क्राइम रिपोर्ट है उसका बारे में पहले पता कर लीजिए, तब तो बंगाल को वो सोचेगा। जिसमें वो राज्य में अपना राज चला रहा है उसी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, उसी में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो बंगाल का क्या सोच रहा है? মমতা 10 বছরে কি কাজ করেছে সাধারণ মানুষ তার জবাব দেবে। আর 10 বছর ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মমতা দিদিকে নিজে हम लोग ये সাধারণ মানুষ জবাব দিয়েছে বলে 19-এ হাফ আর 21-এ সাফ হবে। এটা সাধারণ মানুষই জবাব দিয়েছে, ঠিক আছে, আমরা দিচ্ছি না। এটা মানুষের গণনা, মানুষ দেখছে, মানুষ রাখতে চায়। 19-এ হাফ 21-এ সাফ, এটা লিখে নিও। इस बार 200 पार, धर्मीय मेरुकरण इस बार 200 पार, इस बार 200 पार। अभी होगा इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी आएगा नहीं। जो झूठा बात बोल के ये लोग 800 सीट लिया, ये बार अभी बीजेपी जो बोल रहा है। अगर ममता बनर्जी हिंदू होती तो जय श्री राम का नारा से डरती क्यों है? ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से तकलीफ है। गलत बात है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। ममता बनर्जी इतना गलत रहती तो कभी हिंदू को सपोर्ट नहीं करती। जात बात लेके पब्लिक में नहीं करना। भगवान किसी का नहीं होता। कोई मन से पूजे, मंदिर तो बगल में, इसको पूजेगा तो भी भगवान मिलेगा। राम वहाँ नहीं बैठ जाएगा, राम वहाँ नहीं बैठ जाएगा मंदिर, वहाँ तो मूर्ति ही बैठेगा, ठीक है। भगवान किसी का नहीं होता। हम जय श्री राम बोले या जय भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम बोले तो उसका राम हो जाएगा, मेरा राम नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? জয় শ্রীরাম বললে তো আমার পেটটা ভরবে না। জয় শ্রীরাম বললে আমার যে হাসপাতালে যাব তার তো চিকিৎসা হবে না। জয় শ্রীরাম হচ্ছে সবার, ভগবান সবার। এরা তো পলিটিক্যাল এটাকে ইস্যু করছে।